first day of trek, Lukla to Fakding. It's average 5 to 6 hours a trek, but it took me around 8 to 9 hours to complete first day, and I was in so much pain first of day itself because my right socket giving me trouble, and उसके बाद मैंने mentally game खेला. So for me it's feel like I almost top of the world. लोगों की सोच अब भी वही है, कमेंट्स अब भी पास किए जाते हैं. मेरे ऊपर भी nothing changed, no accessibility, just on paper everything will be there, but on ground it's 1%. When I was around 9 years old, I got electrocuted and my complete life changed. Against the odds gets a very brave definition on the show today. Well, on the show today is Tinkesh Kaushik. He is a triple amputee, but he becomes the world's first triple amputee to reach the Everest Base Camp. And I want to hear his story. I want to hear how he braved the odds, what went into his training, and his life journey, so to speak. One where he is a fitness coach, and as I said, he has reached the Everest Base Camp on prosthetic limbs. It could not have been easy, but then, you know, he's got a lot of grit. Is it a lot about mental strength? And here is a quick reminder that you can like, share and subscribe to our YouTube channel, Jyotsna Mohan. Many congratulations. It's a huge feat that you have accomplished. Thank you so much. Such a remarkable story of grit, of courage, isn't it? Yes, most importantly. Most importantly, तो उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूँगी. But शुरू से I want to, you know, just say that stories like you are so inspiring, and I'm actually so fortunate to be able to speak to you. You become actually the world's first triple amputee to reach the Everest Base Camp. तो सबसे पहले मुझे बताइए, how did the thought come about to try this challenge? Actually, I wanted to submit Mount Everest first. In 2017, I reached out to someone, and that lady told me you cannot attempt that because you don't have money. Then I said okay. In meanwhile, I was preparing for my continued my fitness journey, and I was planning for since last couple of years, and lockdown also happened in between. When times come, it happens. So this is the year, and it happened. This was the year. This वो जो सही वक्त, सही समय जिसको कहते हैं, right, Tinkesh? Yes. मुझे बताइए that decision has been made. You have been wanting to go, मगर उससे पहले भी there is the whole lot of the challenge of training, acclimatization, all of that. उसके बारे में I want to know more. In case मैं अपनी ट्रेनिंग की बात करूं तो एज मेरा ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग थ्रू आउट द इयर्स कंटिन्यू रहता है, और स्पेसिफिकली इसके लिए जो मेरे केस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे प्रोस्थेटिक, और उसके बाद ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग लास्ट 3 मंथ से मैंने अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एंडोरेंस ट्रेनिंग पे काफ़ी फोकस किया, जिसमें मैं विद वेट्स वॉक करता था अराउंड 15 to 20 kg sandbag and 40 kg dumbbells in both side, even on this side. ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग था. इसके साथ साथ 5 to 10 किलोमीटर मेरा एवरेज वॉक एंड रनिंग होता है डेली. बिसाइड दैट मेरा एक ये रहता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपना. तो हम वहाँ पे जब भी हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप, तो उसके लिए हमें अपना लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ता है. तो उसके लिए कुछ प्राणायाम्स होते हैं, वो मैंने किए स्टार्ट, और ये मेरा ट्रेनिंग था. और सेकंड जो मैंने फर्स्ट बोला था कि मेरे केस में फिजिकल से ज़्यादा मेरा एक जो प्रोस्थेटिक है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होना ज़रूरी है. तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली एक नया फुट मुझे स्पॉन्सर किया गया ओसोर कंपनी से, जो मेरे टारगेट्स को मीट करेगा, और एक कंफर्टेबल सॉकेट का होना भी ज़रूरी है, जिसमें
इजीली वो कर पाते हैं। तो ये दोनों का कंबाइन होके आई डिड दैट। The trip, the actual trip. How Yes. long was it? उसके बारे में बात करते हैं. So it's a 15 days trek from India to India. I started from 3rd of May from Goa, and on 4th we started from Kathmandu to Lukla. That is the first day of trek. Lukla to Phakding. It's an average 5 to 6 hours a trek, but it took me around 8 to 9 hours to complete first day, and I was in so much pain first of the day itself because my right socket giving me trouble, and at the end of the day I was like, I need to go for MRI when I will reach back to India. And on second day I thought it won't happen without your mental strength. So I switched my mind. I forgot my physical pain. I go with my mind strength only. कितने दिन लगे to On 8th day, I was on Everest base camp. So पहले was your first day the toughest day? उसके बाद yes, आसान होता गया. I still consider my first day is toughest because of all that pain I went through. उसके बाद मैंने मेंटली गेम खेला जो मैं हमेशा से यूज़ करता हूँ अपने किसी भी चैलेंजिंग इवेंट्स के लिए। और फिर जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे गए, एक्लिमेटाइज किया नामचे बाजार में, एक दिन हमारा रेस्ट था, उसके बाद हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया। और जब हम दिंगबोचे पहुँचे तो वहाँ पे मुझे EMS हो गया था। वो फर्स्ट साइन था, लेकिन मैंने टैबलेट लिया। मेरा जो ट्रैक लीडर था ललित यादव, उसने सजेस्ट किया कि टेक टैबलेट, क्योंकि मुझे लगा नॉर्मल हेडेक होगा। सो आई टुक दैट मेडिसिन। लेकिन जस्ट बिकॉज सेकंड लास्ट डे व्हेन वी रीच टू लोबुचे, उस शाम को तो मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन हो गई थी। ऑक्सीजन लेवल भी इन केस ड्रॉप हो गया था मेरा इनफैक्ट। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लास्ट डे था तो आई हैव टू गिव माई एवरीथिंग। सो we started early in the morning around 6 o'clock, and I took medicine from Lobuche to Gorakhpur. It took us around approx 9 to 10 hours to reach on Everest base camp. How many days were you trekking every day for those? So totally it's a 80-kilometer trek. In all 15 days, it's a 80-kilometer trek, and on the way back I flew because on descending I cannot control my knee, so all the pressure will come on my knees. On 15th I was back to India. When you finally reached there, what was it like all around you? What did you see? What is the first thing जिसको कहते हैं ना आपको लगी, experience करी? So for me it's feel like I almost top of the world. Almost just summit बाकी है अभी। वो भी हो जाएगा। Yes, I will do that. और वहाँ पे जाके जो समझ आया कि you have to go with your mental strength. It's not a easy track. किसी के लिए easy track नहीं है। You have to prepare no matter in fitness or your breathing as well as your mental strength. You have to prepare in, get ready for all challenges you have to face there, because you have to go through rocks, big rocks, stairs, downhill, so many things. It's a challenging track, but it's doable. What is the biggest challenge that you found? For me, it was my first day was the biggest. I was struggling to complete my first day. Mental health. In case you're speaking a lot about mental health, उसके बारे में I want to speak about. जब आप बोलते हैं कि then you dig into your mental health, उसमें actually क्या, what does it include? What does it mean? For PWDs, it's a totally different case. Personally, talk about myself in my childhood. When I was around 9 years old, I got electrocuted and my complete life changed. कोई socialization नहीं था, just एक room के अंदर 3 months तक
आफ्टर ट्रीटमेंट जब मैं घर पे आया तो ये मेरा लाइफ रह गया था कि घर से स्कूल, स्कूल से घर, नो सोशलाइजेशन, लो कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी, एंगर इश्यूज, ये मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स हैं। सो इनसे डील कैसे किया जाए? धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ा। जब मेरे फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल लिम्ब लगे तो वो एक मोमेंट चेंज आया जब मैं खुद को इंडिपेंडेंट फील हुआ कि अब मैं एटलीस्ट मूव कर सकता हूँ। इससे पहले मेरे पेरेंट्स ही मेरी टेक केयर कर रहे थे, चाहे कहीं भी आना जाना है। तो ये सिम्टम्स है। और कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। एक डिसेबल पर्सन की लाइफ के अंदर हम बात करें तो उससे क्या कोई सोशलाइजेशन नहीं, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं, वो सेल्फ आइसोलेटेड होकर रहते हैं खुद ही। और उसका रीज़न भी ये है कि सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर। नेगेटिव कमेंट्स पास करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी बताना कि यू आर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर पेरेंट्स, ऑन सोसाइटी, सेम हैपन विद मी। These are the things, and for that I went to EBC for this cause only, to raise mental health awareness for person with disabilities, and I was also trying to raise funds for them. So I started my foundation called Tinke's Ability Foundation, and we are focusing especially on mental health, so we can counsel them who's struggling with their mental health issues, and as well as with their family and caregivers. इसको मैं अभी थोड़ा साइड पे रख के, I just want to go a little bit back to, when you were speaking about your own journey when you were 9 years old and the anger issues. उसके बाद gradually, what change came about with you? So many changes. Till 2015, nothing changed. I was living my same life, no communication with anyone, just focusing on myself, that's it. And in 2016 I started my fitness journey first. I was told about with my teachers that I became so fat, stop eating. These were the comments they were passing when I was in 12th standard. And after that, in 2016, after finishing my graduation, I started my fitness journey, and then completely it's changed. I started traveling myself against my parents' wish, because they wanted me to take any help from family or anyone so I can go anywhere. But I refused totally. After coming to fitness, I also started my para sports training. I participated in so many games, not internationally, but I played every game which I couldn't play in my childhood. There is nothing which I didn't do now. So I started traveling. I started communicate with people. I have my own strong support system behind me. Because of them, I was on my ABC track. So it's a huge thing for me. Coming back to mental health and disability, I want to ask you larger question about disability rights in India. कभी-कभी लगता है कि थोड़ी बहुत awareness has increased, but then when I hear stories like yours, I wonder if has anything really changed? Ground level पे changes आ रहे हैं. Out of 100 only 1% changes आ रहे हैं. लेकिन लोगों की सोच अब भी वही है. कमेंट्स अब भी पास किए जाते हैं. मेरे ऊपर भी, मेरे जिन लोगों के मैं टच में हूँ जो डिसेबल हैं, उन लोगों के ऊपर भी nothing changed, no accessibility. Just on paper everything will be there, but on ground it's 1%. What about traveling? When you travel? Travel, as of now I'm in Goa, so public transportation is very bad. अगर मेरे पास घर पे मम्मा है साथ में तो मैं उनके साथ ही ट्रैवल करता हूँ, और अदरवाइज आई हैव माय ओन ट्राइक बाइसाइकिल, सो आई ट्रैवल ऑन दैट. अगर बाहर जाना है तो बाहर तो दूसरे स्टेट्स में अच्छे खासे ट्रांसपोर्टेशन मोड हैं, तो वहाँ पे इजी है. लेकिन बात फिर आती है,
इजी मेरे लिए है लेकिन दूसरे लोगों के लिए नहीं है। जो व्हील चेयर यूजर्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो विजुअल इम्पेयर्ड्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इट्स अबाउट होल कम्युनिटी, नॉट ओनली सिंगल इंडिविजुअल। It is about the community. Very well said, Dinkesh. जब Paralympics आते हैं, then we see a little bit of थोड़ा सा attention आता है, फिर it comes back to square one, doesn't it? यस, थोड़ा सा आता है, वो भी बस एथलीट्स के लिए, नॉट फॉर जनरल पब्लिक। And that's again another difference, isn't it? मतलब Yes. athletes are themselves fighting for finances. So general Yes. public and finances is very tough, isn't it? Even everyone, because jobs ज़्यादा create नहीं कर पा रहे हैं हम। अराउंड अगर हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर बात की जाए तो 1% रिजर्वेशन है PWDs के लिए। आई गेस 1 और 3% कुछ है। जो टोटल पॉपुलेशन है PWDs की, वो उससे भी बहुत ज़्यादा आगे है, जो आधे लोगों का तो काउंट आता भी नहीं है। यहाँ पे लॉन्च किया गया है एक UDID कार्ड के लिए, ऐप का नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आप उसमें अपना UDID नंबर डालेंगे तो आप इजीली गवर्नमेंट की सभी स्कीम्स अवेल कर पाएंगे, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए भी आपको डिसेबल होना जरूरी है। अगर आपके साथ कोई एलआई है, अगर आप कहीं पे जा नहीं सकते, उन्होंने गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाइए, अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो उसका फोटो लेके डाल दीजिए, वी विल डू वर्क। लेकिन जाएगा कौन? PWDs तो जाने से रहे ना, वो एंट्री नहीं कर पाएंगे तो कैसे पता चलेगा। सो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है ग्राउंड लेवल पे, बट वी आर स्टिल गोइंग ऑन, वी आर डूइंग आवर बेस्ट इन आवर लाइव्स। यू आर आल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर, दिनकेश। क्या क्या आपको, जब आप लोगों से बात करते हैं तो क्या क्या आपको सुनने को मिलता है? जो एक वर्ड निकल के आता है, इंस्पिरेशन। यू आर इंस्पिरेशन वर्ड बन गया है, इंस्पिरेशन। इट्स लाइक अ इंस्पिरेशन पोम। आप जिसको भी देखो जो अपने PWD अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, जस्ट बोल के उसको फिनिश कर दो, यू आर इंस्पिरेशन। उसके बाद क्या, एक लेवल दे दिया, लेकिन वो एक कंप्लीट लाइफ नहीं है ना, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो ये काफी फेस करना, किसी को पसंद आता है बोलना, लेकिन एक टाइम के बाद नहीं। स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, लेकिन अभी आप मैं ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन एबल बॉडीड कर नहीं रहे हैं, और मैं कर रहा हूँ तो इंस्पिरेशन बन रहा हूँ। कर तो आप भी सकते हैं ना। मुझे तो डर लगता है। मुझे नहीं लगता मुझसे होगा। मैंने सोचा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं, I don't think I have it in me. All in your mind. It's all in your mind game. How you switch your mind to anything. If you really want to do something in your life. So what do you want to do next? So personally, next I'm planning for Mount Kilimanjaro next year, and this year in September we are organizing one inclusive trek for people with disabilities to take them to Everest Base Camp again in September. Excellent. So we have around 3 to 4 PWDs, able and non-disabled and disabled people. Both will go. It will be an inclusive trek. And Mount Kilimanjaro के लिए what is the plan? So माउंट किलिमंजारो के लिए ट्रेनिंग तो मेरा स्टार्ट रहेगा ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरे केस में क्या होता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो कंप्लीट बढ़ जाता है, क्योंकि एक डेडिकेटेड टीम रहती है मेरे साथ में जो सपोर्ट करती है, तो वो कॉस्ट मेरा बढ़ जाता है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है सब प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन we'll do that. This is the main thing for me. I've seen your bio. There are many things, as I said, a TEDx speaker, fashion model, a coach as well, a fitness coach. How many things are you doing, and how do you get time for everything? So I do everything because I have my own opinion that you have one life only, and I will live it fully without any limitation or foundations. I will just follow my passion. If I want to do something
Other than that, then that will also I will do. So mostly like I'm advocating in every field, no matter it's fitness, no matter it's modeling, no matter it's outdoor activities, and no matter what, I will do everything for a complete community. So they will see and they also can start if they really want to do something big in their life. So I'm going to take the word inspiration out. And let me ask you, how would you want people to think of you? Just think like a human being practical in your life. So just don't give like there is a big gap in PWD community called relationship. When it comes to relationship or other bondings, they just ignore that. You just inspire people. You are good for that only, nothing else. These are the comments. What are the most hurtful comments you've got I that bother you? I misuse my disability. When I started aware people about that, so someone told me I am misusing my disability. As you said, there's such a big gap between understanding what disability is in the country. Implementation and policies to dur ki baat hai. What can we do to bridge that gap finally? You know, to organize more awareness campaigns and to just talk with people. Don't hesitate. If you won't ask, then how will we will tell you? So communication is the biggest thing. Start communicating. and I think as a country we have to get out of that conditioning that we have. That society tells us, and we put everybody into boxes. Yes. And we've put them into boxes for generations and decades. Magar, we haven't learned to come out of that, and that is very, very unfortunate for us because there's so much good and talent out there. Tinkesh, it's been wonderful to speak with you. I wish you really all the very best. It's been my pleasure, and I'm not going to say it's inspiring, although I do like to focus generally on stories that I personally think are inspiring and people that are inspiring. I started this show, Table Talk with Joe, as a alternative to mainstream media. That I get in people who may not always make the headlines, but who deserve more attention. People who lead by example. And you're one of those. Like I said, I will never reach the Everest base camp, but hats off to you for doing it. And secondly, you're a dog man, so you get a double tick in my book. So 2 big things going for you, but there are many, many more things going for you, Tinkesha. Thank you and wish you all the best. Thank you, Jyotsna. Thank you for your time.